Hello, dear students. So, I am Dr. Veenadhari, Associate Professor from Rabindranath Tagore University. Today, we are going to discuss about the topic memory hierarchy and memory interleaving. These are the two important topics in advanced computer architecture. So, this is your second unit topic. And these are the lecture objectives. After this lecture, students able to know the memory hierarchy in detail, and they are able to define important memory properties, and they can understand the importance of memory interleaving, why we need to use the interleaving of memory. So these are the lecture objectives. The first topic, memory hierarchy. In previous lectures, we discussed different architectures like CISC, RISC, and so all architectures are used to improve the performance of the system. Okay, so here also the memory hierarchy we need to maintain to improve the system performance. So storage devices such as registers, these are the memory types, different types, you know already, such as registers, cache, main memory disk devices, and backup storages are often organized as a hierarchy, because to achieve the system performance, to achieve the speed, to improve the speed. So the memory technology and storage organization at each level are characterized by 5 parameters. So these are the 5 parameters we need to know, how hierarchy is designed, how hierarchy is, it will be identified how hierarchy. So these are the first parameter is access time and memory size, cost per bit or byte, transfer bandwidth, how much data it can transfer, and the unit of transfer, and what was the units of transfer. Okay, so these are the 5 parameters we need to consider to hierarchy, to categorize the hierarchy of any memory item. Okay, so here access time, सबसे lowest access time for the registers only, because it is the highest priority. So if it is having the highest priority, the access time is that much high. Okay, if it is the lowest priority, that memory size is very high. Okay, so here the figure, it will very well explain what is the priority of the subset. The first priority is register, and second cache, and cache also there are article, so many cache levels are available, level 1, level 2, like that. Okay, so here I'm trying to say all caches are the second, है ना? And main memory and secondary memory also magnetic disk and magnetic tapes. Okay, so here by the picture how it is representing like this. So here the size is increasing from top to bottom. Okay, the size is increasing, magnetic disk and magnetic tape. Okay, the size is increasing, and if the size is decreasing, the increasing speed, है ना? सबसे पहले रजिस्टर का स्पीड बहुत ज्यादा है, उसके बाद कैश का है, तो साइजेस बहुत स्मॉल है ना? मैग्नेटिक टेप सबसे ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत कम है, बट मेन मेमोरी इन बिटवीन इसकी स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड कैश एंड रजिस्टर. If the size is decreasing, the increasing speed. Okay, so like that, increasing cost per bit also. So here if the size is decreasing, है ना, आपको magnetic tape hard disks are available very little cost, nominal cost, but as well as if you compare with the cache memory and RAMs, these are very costly. Okay, registers also costly. And so increasing size, the speed will be decreasing and cost also decreasing. If size is decreasing, the speed is increasing and cost also increasing. So this is the hierarchy, and hierarchy will be categorized by these 5 parameters: access time, memory size, cost per bit or byte, transfer bandwidth, and unit of transfer. So these are the 3 important properties for maintaining the consistency in the memory hierarchy. So these 3 properties are inclusion, coherence, and locality. And so now we will discuss about detail in detail.
So you need to know inclusion, what is inclusion, coherence क्या है, and locality क्या है. These are the three important properties. So the set inclusion means the set inclusive implies that all informations are originally stored in the outmost level, है ना. So nothing, this is highest. So यहाँ पर आपको एक चीज मुझे बताना पड़ेगा. In secondary memories, है ना, this secondary memory, that means second auxiliary memory, the word can be data can be represented in pages. Data can be represented in pages. And like in main memory, data मतलब represent करना मतलब अपन कहते हैं data can be called as blocks, है ना, block size को represent करेंगे. वैसा अपन auxiliary memory if you are talking, then it is pages में represent करेंगे, segments में represent करेंगे, है ना. From page main memory में block में हो जाएगा. main memory से आप cache is very little, no, so it will be converted as a line, है ना. cache में अपन data को represent करेंगे lines पे, okay, and next registers पे words पे represent करेंगे, okay. So आप cache memory मतलब our virtual memory, whatever we are talking, there is a mapping is necessary between those memories. So mapping कैसे होगा, from say auxiliary memory to main memory, pages to blocks में mapping होना जरूरी है. and cache और main memory के बीच में mapping में क्या होगा, cache की main memory की blocks को cache की lines में convert होने का mapping होने की जरूरत है. and cache से अपन register को words पे convert करने का, okay. so यहाँ inclusion property will tell आपको कोई भी highest मतलब सभी, सपोज आप एक मेन मेमोरी में एक ब्लॉक में डेटा रिप्रेजेंट कर रहे, दैट डेटा शुड बी इन कैश आल्सो, कैश शुड बी इन रजिस्टर आल्सो, है ना. so the level outermost level and this information word found in mn, है ना, that copies of the same words can be found in all the upper levels, है ना. एक रजिस्टर पे डेटा है, so it should be maintained in the main memory, cache, main and secondary memory also if it is required, okay. so here that was कोई भी lower level के data, it should be found in मतलब in upper levels also, that is mi plus 1 memory. next level I plus 1 means the first level second level, है ना. यहाँ पर this is the levels, okay. ये levels पे आपको data होना जरूरी है. So access by word from cache, a block of 32 bytes such as block है ना, यहाँ पर है ना, block means main memory. access by block from memory of page 32 blocks 1 KB such as page from B, मतलब हाईएस्ट मेमोरी में पेजेस में, लोएस्ट मेमोरी में वर्ड पे, फिर ब्लॉक्स पे, एक्सेस बाय पेज मतलब वहां से पेज सेगमेंट्स में, है ना. सो देखिएगा यहाँ पर एक ब्लॉक ये आपको फाइंड आउट करना है, तो मतलब यहाँ पर सो ये क्या है, ये पेज 1 पेज पे आपको ए ब्लॉक होगा, बी ब्लॉक होगा. सो दिस ब्लॉक ए शुड रिप्रेजेंट इन दिस 1 पेज, है ना. ये पेज मतलब पेज में रिप्रेजेंट हो रहा है. दिस पेज शुड बी रिप्रेजेंट इन सेगमेंट्स, है ना. कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड द सेगमेंट्स, है ना. ये सेगमेंट मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स ए बी सी ऐसा, तो उसमें से ये वाला सेगमेंट यहाँ होना चाहिए. सेगमेंट्स से मतलब कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ पेजेस, है ना. मतलब यहाँ पर ऐसा दिया था नॉर्मली पेज एंड इट इज ब्लॉक एंड लाइन एंड वर्ड ऐसा होता है, ओके. इट शुड बी मतलब लाइक आपको रिप्रेजेंट करने का फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू हायर लेवल तक वो वाला ब्लॉक ऑफ मेमोरी यहाँ पर है, तो इस पेज में वो ब्लॉक होना चाहिए. ये पेज इस सेगमेंट में होना चाहिए, ये सेगमेंट कुछ और मतलब बिगेस्ट लोकेशन कहाँ है उसमें होना चाहिए. सो इट शुड बी द मतलब हाईएस्ट लेवल मेमोरी से लोएस्ट लेवल मेमोरी सबसेट होना चाहिए, सपोज, है ना. mi+1 इज अ सबसेट ऑफ mi+2, है ना. सपोज ये मेन मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है, सो कैश मेमोरी इज द सबसेट ऑफ मेन मेमोरी. so the data in main memory which will be included in cache memory, cache memory में क्या क्या डेटा है वो मेन मेमोरी में कंपलसरी होना चाहिए. वैसा प्रॉपर्टी होगा ही नहीं है, कैश मेमोरी में अवेलेबल है, मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, then this property is called inclusion. This property is called inclusion.
ओके, देन आपको कोहेरेंस प्रॉपर्टी, इट इज नेक्स्ट आपको फोर्थ यूनिट पे इन डिटेल वे में आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे ये कोहेरेंस, कैश कोहेरेंस. सो देखिए, कैश कोहेरेंस आई विल एक्सप्लेन यू इन नॉर्मल वे, नॉमिनल लैंग्वेज. Suppose here we are discussing, you know, already multiple processors will be available. Okay, so multiple processors के साथ each processor will be having local memory, है ना. लोकल मेमोरी कैश के साथ, मतलब लोकल मेमोरी अपना कैश, एंड शेयर्ड मेमोरी आल्सो इट विल बी अवेलेबल. ओके, सो यहाँ पर क्या है, इफ वन प्रोसेसर है ना, वन कैश इज अपडेटिंग, है ना, एक में कैश अपडेट हो गया, एक में कैश अपडेट होने के बाद अगर इफ इट इज नॉट अपडेटेड एट मेन मेमोरी, ओके, सो मेन मेमोरी में अपडेट नहीं हुआ, देन क्या होगा, देयर विल बी इनवैलिड डेटा सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द कैश एंड मेन मेमोरी. मतलब आपको रुक जाएगा, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैश में दूसरी डेटा है एंड सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में वो डेटा अपडेट नहीं हुआ. इफ ए वर्ड इज मॉडिफाइड इन द कैश, that must be updated immediately at higher levels, है ना. अगर नहीं अपडेट हो गया, then the problem of cache coherence will occur. Okay, so there are two strategies for maintaining the coherence in a memory hierarchy. The first method is write through method and the second method is write back method. Okay, सो कैश कोहेरेंस मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा अगर कैश मेमोरी में अपडेट होके मेन मेमोरी में डेटा अपडेट नहीं हुआ तो. सो उसको अपन ओवरकम करने के लिए राइट थ्रू में क्या करेंगे, immediately. Okay, if you are updating in cache, so if you directly go and update it मेन मेमोरी आल्सो, है ना, लेवल अप, है ना, इससे हायर लेवल, मतलब मेन मेमोरी नॉट ओनली ये आई में अपडेट किया आपने, I+1 में इमीडिएटली अपडेट करो, कैश में आपने अपडेट किया, ओके, मेन मेमोरी में जाके अपडेट कर दो, दैट इज कॉल्ड राइट थ्रू, है ना, डायरेक्ट दोनों जगह पर आप अपडेट कर रहे, देन इट इज कॉल्ड राइट थ्रू. एंड राइट बैक मेथड क्या होगा, राइट बैक मेथड क्या है, सो कैश में अपडेट करने के बाद कैश के सामने एक अपडेट बिट होता है, इट इज कॉल्ड डर्टी बिट आल्सो. ओके, डर्टी बिट के सामने आप इसको सेट करो अगर आपने अपडेट किया तो. इफ कैश मेमोरी अपडेटेड विथ सम, आपने मॉडिफाई किया उस डेटा को, मॉडिफाई करने के बाद अपडेट किया तो उसके सामने एक 1 लिख लेना, मतलब एक 1 को राइट करना, इट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ डर्टी बिट. ओके, अगर डर्टी बिट सेट हो गया, सपोज उस कैश को आप रिप्लेस करना चाहते हैं ना, कैश में तो कभी डेटा रिप्लेस होते रहते हैं मेन मेमोरी से, रिप्लेस आप डिलीट करके दूसरी डेटा को आप इफ यू वांट टू रिप्लेस इट, देन अपडेट है, सो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिलीशन आप वहां अपडेट करके यहाँ पर डिलीट कर दो, उस डेटा को डिलीट कर दो. ओके, सो दिस इज राइट थ्रू एंड दिस इज राइट बैक, है ना, इसमें थोड़ा डिले होगा, इमीडिएटली अपडेट करने की जरूरत नहीं है. अगर कैश की डेटा डिलीट हो रहे एट द टाइम ऑलरेडी अपडेट हो चुका, क्योंकि कैसे पता चलेगा, एक सामने का डर्टी बिट इफ इट इज 1, then go back and update the main memory and delete it. Okay, so this is called the coherence, है ना. first property was inclusion. Okay, up inclusion means every time every data which is in lower levels it must be in higher level, it must present at higher levels data, that was inclusion. coherence means if it is lower level में कोई updation हो गया, then you need to update the higher level data also. Okay, this is called coherence. And the third property is locality of reference. Okay, so here locality of reference, while you are using the cache memory, the concept will come, locality of reference, that is here the locality of reference will be divided into 3 categories: temporal, spatial and sequential locality. Okay, temporal locality, recently referred items like if it is loops, if you are using like temporary variables or functions if you are using, so recently frequently referred items which will be placed in cache, that is called temporal locality, because the data it is frequently will be used up to वो फंक्शन कब तक एग्जिस्ट होगा तब तक उस डेटा की जरूरत है, अदरवाइज परमानेंटली मतलब उसको रखने का जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी वेरिएबल्स है, इसीलिए इसको कहते हैं टेम्परल लोकैलिटी.
And spatial locality. Spatial locality means here if you are using like arrays, है ना, arrays examples if you are using. So that in that array first address and second nearer address है ना, nearer to that first data. So table of arrays है, so एक के बाद तो second होगा, कंटिन्यूअसली एक्सेस होगा, कब तक होगा वो अरे, कब तक आप मेंटेन कर रहे तब तक ये टेबल ऑफ डेटा मतलब पूरा आपको यूज करना पड़ेगा ना. सो इट इन्वॉल्व्स द एक्सेस ऑफ सर्टेन क्लस्टर्ड एरिया, है ना. तो आपको एरिया पता है इतना, मतलब आपको 100 एलिमेंट्स है उस एरे में, सो यू नीड टू यूज दोज 100 एलिमेंट्स इन दैट, है ना. सो देन इट इज कॉल्ड स्पेशियल लोकेलिटी, है ना. स्पेशियल लोकेलिटी इसलिए कहते हैं उस स्पेस को, क्लस्टर को ये मेंटेन करेंगे, इसीलिए दैट इज कॉल्ड स्पेशियल लोकेलिटी. मतलब इसको मेंटेन करने की जरूरत है. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, है ना. टेम्पररी वेरिएबल्स है तो टेम्पररी लोकेलिटी, स्पेस अरेस यूज करे तो स्पेशियल लोकेलिटी. एंड सीक्वेंशियल लोकेलिटी. सीक्वेंशियल लोकेलिटी मीन्स दैट इज if you are using a sequential execution, है ना. so आप फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट एड्रेस पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फिर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर विल इंक्रीमेंट सेकंड है ना. वैसा आपको सीक्वेंशियल लोकेलिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला इट फॉलोज द नेक्स्ट, है ना. सो बट समटाइम्स there will be some branch instructions or jump instructions will be available, so it will out of order execution हो जाता है. इसके अलावा बाकी हमेशा मतलब sequentially it will follow. so sequential के follow करने के time पे you need to maintain the that memory need to maintain the sequential locality of reference, है ना. इसको maintain करने की जरूरत है. so the ratio of an order of execution to out of order execution is roughly 5:1 in ordinary programs, है ना. so आपको order of execution वैसे 5 programs if you are using 1 program ऐसा हो जाएगा, उसको change करना पड़ेगा. otherwise 5 instructions आपको करना पड़ेगा sequentially, इसके बाद एक instruction out of order आ सकता है. मतलब this is called actually the sequential locality. okay. so while talking about the memory, we need to follow these 3 properties. okay. एक है inclusion, okay, and coherence and this locality of reference. okay. then only we can achieve the hierarchy, we can maintain the hierarchy and we can achieve the speed, है ना. to maintain the hierarchy and speed, so these properties are very important. okay. so this is the memory hierarchy properties like inclusion, coherence and locality of reference.